गुड आफ्टरनून सर। यस यस यस। ओके, चलो तो आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और किस तरह से उसके अंदर जो अलग अलग फॉर्मूले जो बनते हैं और उसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो ये हमको देखना है। इनफैक्ट बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही हमको आज पूरा लेक्चर करना है। ठीक है, इट इज द स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लेनर मोशन और वी कैन से द मोशन इन प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन कैन से। सो टू डायमेंशनल मोशन के अंदर का ये स्पेशल कैटेगरी है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन you can see its different examples and also important interesting features of this projectile motion. Okay, तो देखो यहाँ पे what is projectile motion basically is, see, if suppose there is a surface, okay, ये horizontal surface है हमारे पास, okay, और मान लो कि एक हमारे पास बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सपोज इस टाइप का। ओके, दिस इज द ball which is kept at the origin. Yes, so it's kept at the origin, इसको हम origin बोल देंगे। ओके, and suppose that velocity, tilted velocity is given to this ball। तो अभी देखो यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे एक पुश देंगे, एक वेलोसिटी देंगे इस डायरेक्शन में, अगर उसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है, सपोज इट इज फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के हमने इसको फायर किया, किक किया। सपोज दैट एंगल इज गिवन टू बी थीटा। ओके, तो इस थीटा एंगल पे हमने इसको फायर किया, तो क्या होगा कि उसका जो मोशन है तो वो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। इट गोज ऑन मूविंग in this direction in a straight line initially, but afterwards its motion or its path of its motion goes on bending more and more. At a particular point it becomes purely horizontal, तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल horizontal बन जाता है। If we see the velocity of this body at this point here, it will be a tangent, ठीक है, tangent, or we can say simply horizontal in this case here। तो ये horizontal direction में उसका velocity बनता है इस point पे, no doubt। But afterwards, even after this point, what happens is its velocity goes on changing still more and goes on bending more and more। तो यहाँ पे आगे और वो नीचे नीचे बेंड होता जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा होता है, इट्स जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड at some distance, and suppose this is the point where it strikes the ground। okay, तो यहाँ पे वो सपोज ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, ये हम समझ सकते हैं। okay, so this point will be called as the point where it strikes the ground at this point। okay, तो ये इस टाइप का जो मोशन है तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। रिमेंबर, just we will modify it slightly। it is purely symmetric, symmetric in the sense जैसा वो यहाँ से ऊपर तक हमको दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही हमको इसके आगे भी दिखेगा। इस पॉइंट के आगे हम बिल्कुल जो उसका पार्ट है वो बिल्कुल सेम ही देख पाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सिमेट्रिक। ओके, इसका एग्जांपल क्या है तुम देख सकते हो, बास्केटबॉल, ठीक है ना, बास्केटबॉल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। यू सी
whenever a basketball is thrown at some point, okay, it moves in the same direction, follows this type of path, and finally enters into the net, which is kept here at some distance above. तो यहाँ से वो यहाँ पे एंटर करता है और इसमें से नीचे चला जाता है. तो ये जो इस टाइप का जो मोशन है, that is the projectile motion. We can see, or even cannon fired from a, ये देखो इस तरह से जो होता है, तुमने देखा होगा यहाँ पे जैसे हम इसको ब्लास्ट करते हैं तो इसमें से जो है कैनन जो निकलता है वो सीधा इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है. और एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल. रिमेंबर, तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है? इट इज सिंपल द ऑब्जेक्ट विच इज फायर्ड एट सम एंगल, नॉट वर्टिकली अपवर्ड्स. अगर हम सपोज इस ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सीधा ऊपर जाएगा और बिल्कुल सेम पाथ लेके वापस यहाँ पे ही आ जाएगा. बिल्कुल, दिस इज a special category of projectile motion when the angle theta is going to be 90. Okay, that is also called as a projectile motion, but we are not going to discuss this much in this chapter in detail because we have already discussed this type of motion in the previous sessions. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने ये इस टाइप का जो मोशन है उसके अंदर किस तरह से ग्रेविटी काम करता है और किस तरह से हाइट और वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो हमने ऑलरेडी देखे हैं. इट्स कॉल्ड एज द वर्टिकल प्रोजेक्टाइल. ओके, तो बट अभी यहाँ पे हमको एक ऐसा प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करनी है जो कि एक एंगल थीटा एंगल पे इंक्लाइन डायरेक्शन में थ्रो किया हुआ है एंड इट मूव्स इन दिस अलोंग दिस पाथ एंड फॉल्स ऑन दिस पॉइंट at this point here. Okay, and let us take that this point, this axis is taken as x-axis. This vertical axis here is called as y-axis. Okay, इसको हम y-axis बोल देते हैं. चलो ठीक है. So this is your y-axis. Okay. Now we see every point of the motion of the body will have some coordinates, right? तो इसमें हर एक point को जो है ना वो coordinates रहेंगे. देखो. So suppose that this is a particular point at which the body comes at some time t, and that point P is having some coordinates with respect to this coordinate system that is denoted by x and y. So obviously x coordinate will be nothing but the perpendicular which is drawn from this point P on x axis. तो यहाँ पे जब हम perpendicular ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे x coordinate of that body. करेक्ट है? और अगर इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया y एक्सिस से भी, y एक्सिस के ऊपर भी, तो वो जहां पे भी जाके मिलेगा उसको हम बोलेंगे y coordinate of that particle P. Okay, so here it is the y coordinate of this particle or point. Okay, this is the y coordinate. We can denote it by y, and this is going to be the x coordinate. We can denote it by x. That is the, अब देखो ये x मतलब क्या है यहाँ पे? It is the horizontal distance traveled by the body or projectile. And what is y here? It is the vertical distance traveled by the body. Or we can say horizontal displacement is x and vertical displacement is y. Okay. And now at the same time, suppose the body is fired with the velocity u. Okay, तो इसका initial velocity कितना हो गया? u उसको हम बोल देंगे. ठीक है. But this u also can be resolved into two components. As we know that every vector, suppose ये हमारे पास xy coordinate system है और अगर कोई भी एक वेक्टर जो है हमारे पास तो वो अगर u suppose है इस तरह से, suppose this is a vector u or we can say u bar. Okay, तो ये वेक्टर हमारे पास है. तो this vector can be resolved into two components. One is along x axis and other is along y axis. करेक्ट है? तो ये दो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग इस कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, u को हम रिजॉल्व कर सकते हैं. अभी इसमें से देखो ये जो x कंपोनेंट है तो उसको हम सपोज चाहिए तो येलो कलर से एक्सप्रेस करेंगे.
So that x component of this vector will actually be like this. ये देखो ये हो गया x component, okay, and this will going to be the y component of the same vector. Yes, so these are the two components we can say which are actually expressed as, one of them will be expressed as u cos theta and other one will be expressed as u sin theta. देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको एक्चुअली हम ux भी तो बोल सकते हैं, देखो ठीक से इसको हम ux भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. See here, this will be actually called as the ux, but ये बात अलग है अभी कि ux is actually equal to u cos theta, remember u into cos theta. और दूसरा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसको हम uy बोल सकते हैं, नो डाउट, एंड दिस uy इज एक्चुअली गोइंग टू बी u sin theta, ओके, ये भी याद रख लो ठीक से. So this is u cos theta and u sin theta, which are called as ux and uy. Okay, they are called as the components of this initial velocity along horizontal and vertical, or along x-axis and y-axis. Okay, चलो ठीक है. तो इस u को हमने दो कंपोनेंट्स में जो रिजॉल्व किया तो उसमें से एक कंपोनेंट उसका बनेगा इस डायरेक्शन में जिसको हम बोलेंगे u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो उसका है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा, ठीक है, और uy उसको हम बोल सकते हैं. चलो ठीक है, तो देखो एक से ये है, these are the two components, one of which is going to be ux. And this will be going to be uy. Okay, now see, along with these two components this body will just move at point p here. Suppose अब यहाँ पे जब वो point p पे आ जाएगा बॉडी तो उस समय भी तो उसका वेलोसिटी कुछ तो भी रहेगा जरूर. So let us take the velocity of this body at this point here to be represented by this vector. Okay, ये वेक्टर से उसका वेलोसिटी हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Okay, जिसको हम v बार बोल देंगे, v. Okay, now this v also is having the two components actually which are expressed like v cos theta and v sin theta, where v is going to be the component of velocity, velocity at this point here. इसको हमने v से डिनोट करके रखा है, तो इसलिए इसके भी जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे ना वो यहाँ पे बनेंगे. देखो एक कंपोनेंट बनेगा उसका x एक्सिस के डायरेक्शन में, राइट, तो इसको हम बोल के रखेंगे vx, ओके, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा उसका y डायरेक्शन में जिसको हम बोल के रखेंगे vy. ओके, yes, this is vy. ओके, क्लियर. चलो ठीक है, ये जो है ये हम थोड़ा सा डॉटेड बना सकते हैं. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे दिस इज द प्रोजेक्ट टाइप. अभी देखो ये सारे जो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए ना तो वो एक बार याद रखेंगे ठीक से. देखो व्हाट इज यू हियर, वो लर्न भी करो अभी मेरे साथ साथ फटाफट. व्हाट इज यू हियर, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, yes, so u is actually going to be initial velocity. ओके, दूसरा v माना क्या है यहाँ पे, इट इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, and what is ux and uy here,
तो ux is called as the x component of initial velocity. We'll write it down, x component of u, ऐसा ही बोल देंगे उसको, ठीक है ना. एंड व्हाट इज यू वाई हियर, उसको हम बोलेंगे y component of v, मतलब ही फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो ये दोनों तो हमको मिल गए, चलो ठीक है. व्हाट अबाउट दिस v is also resolved in two components like uy and vx and vy. So what is vx here? It is called the x component of v. Okay, x component of v. Yes. And what is vy here? Vy is actually going to be the y component of v only. Okay, देखो u के दो कंपोनेंट्स हमको मिल रहे हैं जो कि ux एंड uy है, और v के भी दो कंपोनेंट्स हमको मिल रहे हैं जो कि vx एंड vy लिख रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अभी और एक बात है, व्हाट इज दिस x हियर? x is the horizontal displacement, or we can say the displacement of the particle along x axis. Okay, तो उसको बोलेंगे displacement along x axis. Okay, and what about the y here? Y is nothing but the displacement along y axis. Okay, तो ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है. Y is the displacement along y axis and x is the displacement along x axis. Yes. And ये ऐसा जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, तो सेम वैसा ही डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये देखो v के लिए, तो v मतलब क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी के लिए भी हम ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से. देखो ठीक से, उसमें सिर्फ u जो है वो रिप्लेस हो जाएगा v के द्वारा. यस. सो अभी ये एंगल जो है वो एंगल एक्चुअली थीटा नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और रह सकता है आराम से. Okay, we can call it as theta dash, no problem. So we'll say this velocity, the final velocity is going to be v here, and this v can be resolved into two components which are like vy and vx. बराबर. So actually vx is actually going to be v into cos theta dash, where theta dash is the angle made by this vertical final velocity with the horizontal, and here it is going to be vy, which is going to be v into sine theta dash. Okay, so this is sine theta dash. Yes, so this is the diagram for resolution of v here. तो इस v को हमने रिजॉल्व किया इस तरह से. ओके, तो ये हमने बेसिक टर्म्स जो है इसके अंदर देखे, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन से बेसिक टर्म्स देखे, ठीक है, समझा? एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड which is denoted by x and y. Yes. दूसरा हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी u, उसको हम डिनोट करते हैं. एंड इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम ux बोलते हैं, और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कि uy बोला जाता है. और ये है फाइनल वेलोसिटी. अब देखो फाइनल वेलोसिटी हम कौन से भी पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं. ये इस पॉइंट पे हमने कंसीडर किया है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी तो कर सकते हैं, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इस पॉइंट पे भी तो कर सकते हैं, इट विल बी समवॉट इन दिस डायरेक्शन. तो एट एवरी पॉइंट वी कैन कंसीडर द फाइनल वेलोसिटी हियर. सो द फाइनल वेलोसिटी हियर इज गोइंग टू बी v. ओके, ये v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, बट इसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, जिसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं vx के द्वारा, जिसको कि v cos थीटा भी बोल सकते हैं. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बनता है vy, जो कि y कंपोनेंट उसको कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हम बोलेंगे उसको, एंड दैट इज डिनोटेड बाय vy, and it is also equal to v sin theta dash, where theta dash is going to be the angle
made by this final velocity with the horizontal. Okay, तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे थीटा डैश, and then we can just resolve this b in terms of two components, x axis and y axis. Okay, three more important terms are to be introduced here. Okay, तीन और terms हमको यहाँ पे introduce करने हैं. Let us introduce those. See here, suppose this is the horizontal and this is vertical. ये x axis और y axis हमको मिल गए, और सपोज कि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने थ्रो किया इस डायरेक्शन में, ये u स्पीड से उसको हमने थ्रो किया. ठीक है, ओके, तो इसको हम बोल देंगे u. इट इज द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज एज सून एज इट इज थ्रोन इट विल गो ऑन मूविंग इन द कर्व डायरेक्शन. तो ये कर्व्ड पाथ से वो मूव होगा, आगे बढ़ेगा. सो वो जो कर्व्ड पाथ है वो हमने इस तरह से दिखाया है. देखो स्टार्टिंग में तो वो नो डाउट उसके कोइंसिडेंट ही होगा, u के साथ कोइंसिडेंट होगा, बट आफ्टरवर्ड्स it will go on bending more and more, and finally it will hit the ground at particular point. Yes, like this. तो यहाँ पे जाके वो सीधा जाके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, और ये जो उसका वेलोसिटी होता है तो उसको भी हम बोल सकते हैं एक्चुअली u, बट और जो भी वेलोसिटी उसका है उसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, बट ठीक है. अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो पॉइंट इसको हम बोल देंगे a. Suppose this is the point a and this is the point o here, that is origin. Okay, so the important concept here is that the range of projectile. See, what do you mean by the range of projectile? Is the horizontal distance, maximum horizontal distance traveled by this projectile will be actually called as the range of this projectile. तो मतलब इस O का A से जो डिस्टेंस बनता है टोटल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल R. रिमेंबर, दिस R इज द सिंबल फॉर द रेंज. ओके, तो ये रेंज का मतलब क्या होता है समझा ठीक से? इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस. यस, सो दिस इज कॉल्ड एज द रेंज. याद रखो, R स्टैंड्स फॉर range of projectile. Yes, next is the concept of maximum height of this projectile. Okay, what do you mean by this maximum height of projectile? It is simply the yes. Okay, so basically maximum height is nothing but the maximum horizontal distance traveled by this projectile. Maximum vertical distance traveled by the projectile, मतलब ये जो distance है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे, तो ये जो distance होता है इसको हम डिनोट करते हैं h, और उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. यस, उसको हम कैपिटल H से डिनोट कर देंगे. इट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, एंड तीसरा कंसेप्ट आ जाता है द टाइम ऑफ फ्लाइट. रिमेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन बाय दिस प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम this point to this point here, it's called as the time of flight. Remember, पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है कि नहीं प्रोजेक्टाइल को, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. रिमेंबर, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल T. ओके, तो ये कैपिटल T उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T. इट स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. It is the time required by the projectile to strike the ground once again after it's projected from the ground. Okay, and there are two more concepts here which are called as the time of ascent and
टाइम ऑफ डिसेंट, रिमेंबर, देखो ठीक से, time of ascent and time of descent. What do you mean by that? See here, time of ascent. What do you mean by this time of ascent? It is the time required by the projectile to move from the point of projection to the highest point only. That's it. So यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो projectile को time लगता है उसको हम बोलते हैं time of ascent. Remember, it will be denoted by TA. Okay. And the second thing is time of descent. देखो ठीक से, time of descent. What do you mean by that? The time taken by the projectile to move from this highest point to the ground once again. It's called as the time of descent. It is denoted by TD. देखो ठीक से. Okay. So these are the two concepts. Okay. अभी इसमें देखो एक नेचुरल बात आती है कि ऑब्वियसली ना कि जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए लगेगा जरूर, जिसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टाइम ऑफ एसेंट इज एक्चुअली इक्वल टू गोइंग टू बी टाइम ऑफ डिसेंट, रिमेंबर। एंड उससे भी आगे जाके ये जो यहाँ से लेके पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, बराबर, कैपिटल टी से उसको डिनोट करते हैं। तो वो जो कैपिटल टी है वो कितना रहेगा, जरूर टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट के सम के बराबर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल टी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस time of descent, and then if we just add these two up, but already we know that this time of ascent is going to be same as the time of descent, right? So if we just replace one for each another, then we can get this time of flight is equal to time of ascent plus time of ascent once again, which means that this time of flight should be actually equal to 2 times of time of ascent, which means that time of ascent is actually going to be equal to time of flight upon 2. समझा क्या ठीक से? And since time of ascent and time of descent are just equal, so we can also say that time of descent is also same as time of flight divided by 2. No problem. So this is the relationship between the time of ascent, time of descent, and time of flight. This gives the relationship between time of ascent and time of descent, that both of them are just equal. That's it. Here this is the equation which gives us the relationship between time of ascent and time of flight, right? And this equation gives the relationship between the time of descent and time of flight, correct? Yes. Okay. And one more thing here, by symmetry we can come to know that whenever the particle will be at highest point, okay, when the particle is at highest point, at that time what will be the value of x? तो जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल होगा ही नहीं, प्रोजेक्टाइल होगा, तो उस समय उसका x का वैल्यू कितना होगा, x, तो x विल एक्चुअली बी इक्वल टू r/2, करेक्ट है? तो इसलिए ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है बता सकते हो? ये देखो, what are the coordinates of this highest point of this projectile motion here? तो इस हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो r/2, h, चेक करो कैसे, सीधी बात है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, ये डिस्टेंस रहने वाला है जो कि r/2 है, हमको पता है ऑलरेडी, अभी जो बताया। और y कोऑर्डिनेट कितना है उसका, ये देखो ये h है उसका y कोऑर्डिनेट, राइट? तो इसलिए ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी r/2 and y coordinate is actually going to be h, and that's why we get these coordinates of this point to be r/2 h. Okay, no doubt. Yes, origin के जो coordinates है वो तो 0 0 रहेंगे ही, no problem. But what will be the coordinates of this point A? Can you tell me? इस point A के coordinates क्या रहेंगे बताओ? Point A is going to be on x-axis, right? So its y coordinate has to be 0 surely, but its x coordinate should be equal to r. देखो देख से, so it will be r, 0. तो ये जो
इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो रहेंगे r,0। ये 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, याद रखो इनको ठीक से। ओके, और एट द सेम टाइम ये भी अच्छी तरह से याद रखो कि द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। ये वेलोसिटी जो यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ करता है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी बनता है वो सपोज हमने अगर बोल दिया ये है सपोज वेलोसिटी उसका यहाँ पे, ठीक है। तो वो वेलोसिटी जो भी एंगल करता है, अच्छा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा जितना इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है। जिस वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है, मतलब मैग्नीट्यूड एटलीस्ट सेम ही होता है। बट ये होता है कि यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है कि नहीं, ये भी थीटा बनता है, याद रखो ठीक से। These two angles are going to be exactly same in case of the projectile. So this angle will also be actually theta, no doubt. तो ये बात याद रखो ठीक से। Because of the symmetry, we are going to consider here that the projectile is moving under the action of gravity only. No other external force is acting on this projectile, like air resistance or any other frictional force or any other force, gravitation, electrostatic force या magnetic force, ऐसा दूसरे कोई फोर्सेस उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में या अगर विंड फ्लो हो रहा है तो उसका भी हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट 100% हम निग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि we are assuming that the ideal projectile whenever it is fired at a point it moves under the action of gravity only. ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो आगे बढ़ता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सिर्फ उसकी मोशन कंट्रोल करता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द आइडियल प्रोजेक्टाइल। बट इन रियल प्रैक्टिस वी नो दैट इट डजंट हैपन। तो रियल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि अगर मान लो कि हमने कोई वॉलीबॉल या बास्केटबॉल अगर ऊपर थ्रो किया, और अगर उसी समय अगर हवा बह रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो वॉलीबॉल है या बास्केटबॉल है वो जहां पे गिरना चाहिए, और समझो जो एयर जो है वो इस डायरेक्शन में सपोज फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे वो आइडियली गिरना चाहिए, लेकिन एयर की वजह से क्या होगा, इट्स पाथ विल गेट मॉडिफाइड एंड इट विल हिट द ग्राउंड एट दिस पॉइंट हियर। और एट द सेम टाइम अगर एयर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो वॉलीबॉल है वो एयर की वजह से और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे जाके गिरेगा। तो एयर का जो मोशन है वो अफेक्ट करता है projectile को, no doubt, but we are not going to consider that here in this chapter. We are going to consider the ideal projectile so far as the basic concepts are to be formed. तो इस चैप्टर के अंदर हमको आइडियल प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो हम अच्छी तरह से फॉर्म करके लेंगे, एंड व्हेन वी विल जस्ट हैव देम इन माइंड, तो ये जब हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे चल के जेई नीट लेवल पे जब जाएंगे तभी जाके एयर का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ आइडियल प्रोजेक्टाइल, रिमेंबर। ओके, चलो ठीक है। अभी यहाँ तक जो आपने समझा उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ रिपीट करना है तो प्लीज अभी बोल दो। यस, डू यू वांट एनीथिंग टू बी रिपीटेड? Let us revise what we have done so far. See here, we have seen projectile motion here. Yes. Yes, sir. Please repeat. Yes. Sir, you can repeat. Okay, everything. Okay. Okay. देखो ठीक से यहाँ पे कि we have seen सबसे पहले हमने ये देखा कि projectile is nothing but the motion of a body thrown at some angle with horizontal, and which is controlled only and only by gravitational force. It's called as the projectile motion. Okay, this is called as the projectile motion. So I will repeat again. Projectile motion is the motion of a body which is thrown at some angle, or with a velocity which is inclined at some angle with the horizontal, and which is moving under the action of gravity only. Okay, is called as the projectile motion. Okay, and the object which is thrown is called as the projectile itself.
जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसको ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. तो दैट प्रोजेक्टाइल कैन बी अ स्टोन, इट कैन बी अ volleyball, or it can be a basketball, or it can be a simple ball, okay, or any object which is just thrown at some angle with the horizontal. Okay, तो horizontal के साथ जो उसका एंगल बना हुआ होता है उसको हमने बोल दिया थीटा. बराबर, थीटा हमने उसको बोल दिया था. और ये जो वेलोसिटी होता है उसका, जिस वेलोसिटी से उसको हम थ्रो करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं u से. तो उसको हम u बोलते हैं. और उसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसको हम ux बोलते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होता है तो उसको uy बोलते हैं. तो ये हो गया u के कंपोनेंट्स, u का रिजोल्यूशन. ओके, एंड ux जो है वो हमेशा u cos थीटा के बराबर हुआ करता है, राइट. और uy जो है तो वो हमेशा u sin थीटा के बराबर हुआ करता है, बिल्कुल. और सपोज ये प्रोजेक्टाइल जो है वो t टाइम के अंदर, ओके, t टाइम के बाद अगर मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है, p पॉइंट पे अगर वो पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट p पे जो उसका वेलोसिटी होगा तो उस वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. इट इज कॉल्ड एज द फाइनल वेलोसिटी, रिमेंबर. एंड उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट उसका बनता है तो उसको हम vx से डिनोट करते हैं. और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है तो उसको हम vy से डिनोट करते हैं. और एक्चुअली vx जो है तो वो v cos थीटा के बराबर हुआ करता है, और vy जो है वो हमेशा v sin थीटा के बराबर हुआ करता है. ये बात समझ के लो ठीक से. ओके, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो the distance traveled by the projectile in the horizontal direction after time t, in time t, will be denoted by this x here. तो ये जो x होता है उसको हम बोलते हैं horizontal distance traveled by this projectile, remember. And the vertical distance traveled by the projectile is called as y, remember. Okay, so x and y are going to be the horizontal and vertical distances traveled by this projectile. Okay, and here it is, the maximum horizontal distance traveled by the projectile will be called as the range. जैसा कि हमने दूसरा नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि what is the range of the projectile? It is the maximum horizontal distance traveled by the projectile is called as its range. Remember, I will repeat again. What is the definition of the range? The maximum horizontal distance traveled by the projectile is called as its range. Okay, and what is the maximum height obtained by the projectile? It is the maximum vertical distance traveled by the projectile. It is called as the maximum height of projectile, which is denoted by h, remember. Okay, and at the same time we also have seen that the angle made by this projectile with the initial velocity of the projectile with this x-axis is going to be same as the angle made by the final velocity of the projectile with this x-axis here. ओके, तो ये जो एंगल बनता है वो सेम ही होता है बाय सिमेट्री. और ये भी हमने देखा कि whenever the projectile is at the highest point, okay, its distance from the origin is actually equal to r by 2. Okay, that is half of r, and that's why we have derived the coordinates of this point here. Highest point के जो coordinates है तो वो हमको मिलते हैं, x coordinate उसका मिलता है r by 2 and y coordinate मिलता है h. Yes. And also we have seen that the time of flight, whatever is time of flight of the projectile, the time taken by the projectile from the point of projection to strike the ground once again or to come back to the same level once again is called as the time of flight. I'll repeat again. The time required for the projectile to come at the same level as that of the point of projection is called as its time of flight, remember. And also we have defined two more concepts, that is time of ascent and time of descent. What do you mean is time of ascent? The time required by the projectile to move from the point of projection to the point of highest point is called as the time of ascent, remember. And what is the time of descent? Ulta. The time required by the projectile to move from
the highest point to the ground once again, point on the ground at which the projectile hits the ground or strikes the ground once again. It's called as the time of descent. And also by a simple logic, we have understood that this time of ascent is going to be actually same as the time of descent. Correct है? तो टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होते हैं, ये हमने देखा। और ये भी हमने देखा बाय सिमेट्री दैट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम bottom point to bottom point, that is called as time of flight, is actually going to be the time of ascent plus time of descent, right? And but time of ascent is same as time of descent, so we get that this total time of flight is going to be actually equal to time of ascent plus time of ascent itself, which is going to be actually equal to 2 times of time of ascent. And if we say that this time of flight is equal to 2 times of time of ascent, means time of ascent must be half of time of flight, and also the time of descent must be half of time of flight. That's it. So these are the basic concepts that is to be developed in this chapter about the projectile motion. Okay. Yes. One more thing. Thank you, sir. अरे खत्म नहीं हुआ अभी तक. चलो, one more thing we have to discuss about in this chapter. एक छोटा चीज है, एक ही मिनट में हम वो डिस्कस करेंगे और फिर खत्म करेंगे लेक्चर. देखो ठीक से. ओके, ये एक सिंपल सी बात हम समझेंगे कि अभी देखो, हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है ट्रैवल किया हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, बराबर? ठीक है, इट्स कॉल्ड एज रेंज. और x जो है, x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बराबर है? ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज r एंड x, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है एक्चुअली. ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू डू दिस और गिव द आंसर ऑफ दिस. यस, कौन बताएगा? देखो, अगर प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं x, y है. और x मतलब क्या होता है? यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये सपोज परपेंडिकुलर है, तो इस यस, तो ये जो परपेंडिकुलर जहां पे भी जाके मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं x, राइट है? ये हमारा x है. यस, दिस इज आवर x. Okay, then the question here is that what is the difference between x and r? x किसको बोलने का और r किसको बोलने का, क्या समझते हो? वही बात यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली h बोलते हैं, राइट? कैपिटल h से उसको हम डिनोट करते हैं. ओके, ये हमारा कैपिटल h है. यस, but then what is the basic difference between this capital H and y actually? अब देखो, ये y जो है, y मतलब क्या होता है? The vertical distance traveled by the projectile, right? So if you just project this here in the y-axis, तो y-axis के ऊपर अगर हम एक perpendicular ड्रॉप करेंगे, तो वो उस y-axis को जहां पे भी मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, बराबर? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे कि ये देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये y बनता है, बराबर? Yes, this distance is going to be y. Okay.
question here is that what is the difference between this y and h, and what is the difference between this x and r, जबकि दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये देखो x एंड r दोनों हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, और इवन यहाँ पे देखो y और h दोनों वर्टिकली तो है। ये देखो h भी वर्टिकल है और y भी वर्टिकल है, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? यस यस, वेरी गुड पार्थ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Range is the complete distance of the displacement of the projectile over its journey। तो पूरा जो उसका मोशन है, तो मोशन के अंदर जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कंप्लीट डिस्टेंस जो है उसको हम r बोलते हैं। जबकि अगर टाइम t पे वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, p पॉइंट पे है, तो उस समय का जो उसका डिस्टेंस है तो वो उसको हम x बोलते हैं। समझा क्या फर्क है दोनों के बीच में? x is the horizontal distance traveled by the projectile in time t। okay, टाइम बहुत मैटर करता है यहाँ पे, टाइम। यस, सो टाइम t के अंदर ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलेंगे x, नो डाउट। बट फुल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे r, राइट। और सेम वही बात यहाँ पे भी है, देखो वर्टिकल डिस्टेंस में भी, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t is going to be y। okay, उसको हम y बोलते हैं, नो डाउट। बट पूरे इंटायर जर्नी में या पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाके वापस आया, तो वो मैक्सिमम हाइट जो उसका बनता है उसको हम बोलते हैं h। समझा ठीक से? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन h एंड y हियर। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं कि x इज गोइंग टू बी वेरिएबल, करेक्ट है? देखो ठीक से यहाँ पे ये जो x है ये कौन है? वेरिएबल, वेरिएबल, एंड दिस r is actually going to be a constant। check why? Because it is not going to change, ठीक है? and this is going to change because it depends on time t, but this does not। okay, and that's why this is variable and this is constant। in the same way here y is called as the variable, which is a changing, continuously changing quantity here। but h is not a variable, it's going to be a constant, ठीक है? it's a constant of that motion। तो उस पर्टिकुलर मोशन के अंदर h का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ पे ये जो y का जो वैल्यू है वो सर्टेनली टाइम पे डिपेंड करेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन y एंड h। कैन यू टेल मी व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x becomes equal to r? x becomes equal to r when time t becomes equal to कैपिटल T। याद करो t मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, बराबर है ना? तो मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल पूरा टाइम कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट को हिट करेगा, उस समय टाइम का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल T के बराबर होगा। और उसी समय x का वैल्यू कितना बनेगा? r के बराबर बनेगा। ये बात याद रखो ठीक से। और दूसरी बात, when y will be exactly equal to h। yes, when y will be exactly equal to h, y का वैल्यू h के बराबर कब बनेगा? सिर्फ तब जब स्मॉल t, टाइम t is equal to t by 2, correct? t by 2, or we can say it is equal to time of ascent। ओके, तो जब टाइम t का वैल्यू टाइम ऑफ ascent के बराबर बनेगा या t by 2 के बराबर बनेगा, तो उस समय जो y का जो वैल्यू है वो एक्चुअली h बनेगा। यस, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y when टाइम t becomes equal to कैपिटल T? ये कैपिटल स्मॉल t जो है वो अगर कैपिटल T बनता है तो उस समय y का वैल्यू कितना बनता है? ढूंढ के निकालो जल्दी। वेरी गुड, 0। y will become equal to 0 just because, see, whenever this projectile will just move along this path
and just come back to this point here, then at that time the time will be equal to capital T, no doubt. But what is the y coordinate of this point here? It is going to be 0. That's it. That's why when this capital T, small t becomes equal to capital T, y becomes equal to 0. ये अच्छी तरह से याद रखना है. Okay, these are some special values which you have to remember, which actually depend on these coordinates only. ये coordinates से ही हमको पता चलते हैं. देखो r,0 इसके coordinates है, r/2, h उसके coordinates है, और इसके तो already 0 0 ही है, तो वो भी हमको पता है already. Yes. So all these are the basic concepts that is to be developed in this chapter. So let us stop here and continue the next portion, the next lecture. Okay. So thank you all of you.